Warm regards to all our viewers. I am Dr. Soumen. I am consultant cardiologist and electrophysiologist at Apollo Jubilee Hills, Hyderabad. We have with us a friend of mine, Mr. Shareef. He is a 32-year-old talented young software engineer. At the age of 10, he had a pacemaker implanted way back in 2001 for a slow heart rhythm, bradycardia, and he's been on a pacemaker ever since. Subsequently, because of battery depletions, he had a pacemaker changed at 2014, and subsequently the last one being in 2021, about few months back. In this pacemaker battery change, what we do is normally the wires or the leads which are there inside, for the knowledge of our viewers, that is left behind. Only the pulse generator, which is the unit here, is changed. And unfortunately, after the second change, that is in 2021, the pacemaker site, the pocket area, got infected. And in a situation like this, when you have a pacemaker infection, it becomes a foreign body which is infected, and it's not well treated. It doesn't tend to heal well, and there was, as expected, he started pouring pus out from his pacemaker pocket, and it was extremely resistant to treatment. He took many months course of antibiotics without any response. Eventually, when he came to us, I saw him in my OPD. His pocket site was pretty infected and the pus was draining out. We had to take a call on removing the pacemaker entire in toto. Now, removing the battery is not difficult, but what's tricky is, remember, there are a couple of leads inside, and these leads have been implanted way back in 2001, that is a couple of decades back, and these leads are fixed to the heart very firmly, and they are almost scarred into the heart. And there are two options for removing these leads. One is to open heart surgery and remove the leads, for which he was unwilling, and it's also a major surgery for which. The other option, of course, is to do a pacemaker extraction procedure, which we eventually did. He agreed for the procedure. That's an interventional procedure where we do the procedure through minimal access through the pacemaker site. We did it a week back. The pacemaker device along with the leads were successfully removed, although not before a few heart stopping moments. It was a very difficult procedure, a long procedure on that. But fortunately, I am so happy and thankful that I could remove both the leads out of his heart without causing him much damage or without putting him under a lot of risk. And right now he's with us with the pocket site now rapidly healing. The pus is dried out now. He's quickly on his road to recovery, and I'm really sincerely thankful for that. मेरा नाम अजवादुल्ला शरीफ है। मैं 32 साल का हूँ। मेरे को 21 ईयर्स पहले पेसमेकर लगाए थे। मेरा हार्ट रेट बहुत स्लो रहता था, इसकी वजह से पेसमेकर लगाए थे, जिसको 8 साल के बाद रिप्लेस करना पड़ा। उसके बाद फिर से और एक पेसमेकर लगाए, उसके बाद फिर से 12 साल के बाद उसको भी रिप्लेस करना पड़ा। मेरे हार्ट ज़्यादा डिपेंड रहती थी। जब लास्ट टाइम फिर मेरे को 2021 इसी साल 6 महीने पहले रिप्लेस करे थे, लेकिन उसके बाद में मेरे को जैसा ऑपरेशन होने के बाद यहाँ पे पूरा इन्फेक्शन हो गया था। वो इन्फेक्शन की वजह से पिछले 6 महीने से मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि उसमें से पस निकल रहा था, दर्द भी हो रहा था। धीरे धीरे पेसमेकर भी जिस्म से बाहर दिखने लगी, तो मैं बहुत कोशिश करा कि ये कैसा भी ज़ख्म सूख जाए। तो मेरे को बहुत लोग मशवरा दिए थे कि फ़लाना जगह जाओ, फ़लाना। मेरे को बाद में हमारे साथी ने मशवरा दिए थे कि अपोलो में पर्टिकुलर डॉक्टर का नाम बोले थे कि डॉक्टर सौमेन देवीदत्ता साहब के पास जाके मिलो। तो जब हम आए थे, पहली मुलाकात में ही मेरे को ये ऑपरेशन कराना है बोल के यकीन हो गया था, क्योंकि मैं 2-3 डॉक्टर्स के पास गया था। उन लोगों के पास जाने के बाद मैं सेटिस्फाई नहीं था कि एक्चुअली करना क्या सर। थोड़े लोग बोल रहे थे कि आपको टेम्परेरी डालेंगे, थोड़े लोग देखेंगे राइट साइड ट्राई करेंगे, लेफ्ट साइड ट्राई करेंगे। मेरे को समझ में नहीं आता, मगर सर बोले थे कि आपको ये निकाल देंगे, आपका हार्ट रेट फिल वक्त अच्छा है, पहले आप पेसमेकर निकाल देंगे यहाँ से, ज़ख्म पूरा सूखने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो लगाएंगे, अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो आप बगैर पेसमेकर भी रह सकते बोल के बोले थे। तो हम इसके लिए आगे बढ़े थे, और डॉक्टर साहब के हेल्प की वजह से मेरे को ये आसानी के साथ पेसमेकर भी निकल गया। और मेरे को सबसे बड़ी खुशी की बात ये हुई इस मरतबा कि पिछले 3 बार जब ऑपरेशन हुआ था, तीनों बार भी मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के साथ ऑपरेशन होती थी, क्योंकि मेरे को सुन नहीं चढ़ता था। मगर इस मरतबा डॉक्टर साहब ने उसका पूरा ख्याल रख के मेरा बगैर मेरी तकलीफ़ उठा के आसानी के साथ मेरा ऑपरेशन करवा दिया। मैं डॉक्टर साहब को बहुत शुक्रिया बोलना चाह रहा हूँ इसके बारे में। और डॉक्टर साहब ये पूरा 1 महीने की जो जर्नी थी शुरू के दिन से लेके आज तक की, हर मामले में भी मेरे को पूरा सपोर्ट करते रहे। जब भी मैं डॉक्टर साहब को मिलने आना था और कुछ काम करने के लिए, बोलने के लिए, हर लेन से मेरी बहुत मदद की। थैंक यू।